Hello and welcome. My name is Zafar Iqbal, and you are watching the Mojo Story. Renowned climate activist Sonam Wangchuk, along with 120 of his supporters, were detained at the Delhi border last night. Now, they have been marching from Ladakh to Delhi to press for their demands, and their demands are the schedule status for the Union Territory of Ladakh. Now, they have been demanding this for a while now. These are for pictures earlier. Sonam Wangchuk, when he was pressing for the same demands in Ladakh a few months ago, and now they have taken their protests to Delhi, and they started their march some days ago. And at the Delhi border, at Singhu border, they were detained 120 of its supporters. Now, Sonam Wangchuk released a video on the social media just the time when that detention was taking place. In that video, one could clearly see lots of policemen on the road. You can see on that video, and that in fact, Sonam Wangchuk had said that initially he thought that they had come to escort them, but finally they realized that it was a detention. All of them were being detained. Now they have moved, they've been taken to different police stations, uh, Alipur and other police stations which are close to the city border. And reports also indicate now they started an indefinite fast at the police station. Now, those are the visuals that you can see. Lots of police presence. Now, what is the police saying? The police saying that there are prohibitory orders in place in Delhi, which means more than five people cannot assemble at one particular place. And because of those prohibitory orders, these people were detained. But Sonam Wangchuk and his followers insist that it's a Padyatra for a genuine cause, and nobody can stop them from moving to Delhi. They, in fact, wanted to give a memorandum to the Prime Minister and to the Home Minister listing out their demands. Now, while they were being detained, there were people around, supporters of Sonam Wangchuk, who filmed that moment. In fact, we got one of the videos. We can play that video, exact moment when they were being detained, what exactly was happening there. जी, ये बवाना का वो थाना है जहाँ पे क्लाइमेट मार्च को लेके, पर्यावरण की संरक्षण को लेके जो यात्रा लद्दाख से चली थी, जितने भी साथी हमारे उस यात्रा में चले थे, तो दिल्ली पुलिस ने बड़ी बेरहमी से वो जो है अब हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलते हुए जोर ज़बरदस्ती के साथ यहाँ डिटेन कर रखा है सारे साथियों को, अलग अलग दिल्ली के अलग अलग इलाकों में। लेकिन खेद की बात ये है कि लोकतांत्रिक देश में व्यवस्थाएं किस हिसाब से दम तोड़ रही हैं, वो एक बड़ा ही चौंकाने वाला है। मैं पिछले 2 घंटे से यहाँ खड़ा हूँ, कोई भी आदमी कोई भी बात करने को तैयार नहीं, जबकि हाई कोर्ट की ऑफिशियल जो है ईमेल यहाँ के ऑफिशियल एसएचओ के और अधिकारियों को गई है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कल जो है याचिका लगनी है हमारी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, सिर्फ सोनम वांगचुक जी के हस्ताक्षर और वकालतनामे पे साइन होने हैं, जिसको लेके कोई भी कोऑपरेट नहीं कर रहा। जबकि कई बार एसएचओ से बात हो गया तो बोल रहा है कि ऊपर से ऑर्डर हैं, तो कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानने को तैयार नहीं। और इस तरह से जब सुनने में देखने में लगता है, काफ़ी अफसोस होता है। और जो सीनियर से वो कर रहे हैं, तो ये सब ये कह रहे हैं, ड्यूटी ऑफिसर भी अपनी बात से पीछे हट रहा है कि ये नहीं होगा, नहीं करेंगे। तो इस तानाशाही के लिए Now you saw those visuals there. These are visuals in the night when the detention was taking place. Now this Delhi Chalo Pad Yatra that started from Ladakh is basically organized by Leh Apex Body and the Kargil Democratic Alliance. Now Ladakh region has basically two districts, Ladakh and Kargil, Leh and Kargil. Now they are jointly agitating since the revocation of Article 370. They have been asking for a statehood, extension of the Constitution's sixth schedule, and early recruitment process, and also a public service commission for Ladakh. They have also been
demanding separate Lok Sabha seats for Leh and Kargil districts. Now, those are the demands that they have been flagging for a long time now. Now, what's happened is that this issue has escalated. In fact, political players have also pitched in. There is Rahul Gandhi who has hit out at the Prime Minister over this issue, and he has asked several questions of the Prime Minister. He said that it's unacceptable that Sonam Wangchuk and his supporters have been detained. Now, Rahul Gandhi, of course, is the leader of the opposition, uh, making that statement on a day when Jammu and Kashmir is going to polls for the third phase of the polling. Rahul Gandhi making that statement, hitting out at the Prime Minister. In fact, uh, there is a lot of support that's coming in for Sonam Wangchuk online. That this is a democratic right of him and his supporters to protest for their demands. But as I was mentioning, Delhi police has been saying that there are prohibitory orders in place in Delhi which stop people, more than five people, from assembling at a particular place. Now, there are reports that Sonam Wangchuk and his supporters have started an indefinite fast from the detention center where they have been moved after they were taken on buses and stopped from entering Delhi. Now, what we did, we tried to get in touch with the people who are still at the border. We spoke to one person, Haji Hanifa, and we had a chat with him that what exactly happened. He's from Kargil, and he's also there at the border, Delhi border, and he gave details of what happened, what are their demands, and what is their strategy. But this phono was recorded a short while ago. He sent me a message now that he too has been detained. So we can, of course, use that phono in a short while from now. But you can see from those visuals, this is exactly the time when Sonam Wangchuk and his supporters were detained, just the time when they were trying to enter Delhi. This is the Delhi border where from they were detained, taken in a bus to different places and put under detention. They wanted to move to Delhi to press for their demands, to raise voice about their demands. But for now, they have been detained with a lot of police presence there on the roads. In fact, we can now play that phono, the interview that I did with Haji Hanifa, describing what is the situation there at the border now, what exactly are their demands, and what is the strategy they are going with in the future. But as I was saying, that he too has now been detained. Hello and welcome to Mojo Story. I'm joined by Haji Hanifa Jan, who comes from Kargil and is currently at the Singhu border. Now, environmental activist Sonam Wangchuk, along with his supporters, were detained last night when they were marching towards Delhi. They have been pressing for uh, rights for Ladakh, sixth schedule to be implemented in the Union Territory of Ladakh, and they have been protesting for some time. And now they were marching to Delhi when they were detained. Actually, Sonam Wangchuk also released a video uh, of that. Now there are other people who have come from Kargil, also at Singhu border, including Haji Hanifa Jan. हाजी साहब ये बताइए आप सिंगू बॉर्डर पे है कल जो खबर मिली थी कि सोनम वांगचुक और उनके जो सपोर्टर्स है उनको डिटेन किया गया था अभी किस तरह के हालात है और सोनम वांगचुक जी अभी कहाँ पर है देखिए, आप सबको पता है कि पिछले 3 सालों से लद्दाख के अवाम जो है वो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी ले की क़यादत में अपने मुस्तकबिल को लेके जो 4 पॉइंट एजेंडा उन्होंने बनाया था उसको लेके पिछले 3 साल से बहुत ही पीसफुली हम लोग एहतजाज कर रहे हैं। और सोनम वांगचुक जी की क़यादत में पिछले साल अनशन पे बैठे, फिर इलेक्शन से पहले
जो MHA है उन्होंने एक हाई पावर कमेटी बना के बातचीत का भी एक सिलसिला चला था, जो कहीं ना कहीं जो है इलेक्शन से पहले रुक गया। उसके बाद लद्दाख की आवाम को, वहाँ के जो लीडरशिप है उन सबको ये तवक्का था, ये उम्मीद थी कि जो नया गवर्नमेंट बनेगी, गवर्नमेंट बनने के बाद जो है हमारा जो बातचीत का सिलसिला जो है उसको फिर से शुरू किया जाएगा हमारे इश्यूज को लेके। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट बने हुए तकरीबन 3 महीने से ऊपर हो गए हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिली। तब जाके KDA और एपेक्स की क़यादत ने ये डिसाइड किया और सोनम वांगचुक जी के कॉल पर ये डिसाइड किया कि हम लेह से एक पद यात्रा के जरिए जो है वो दिल्ली तक जाएंगे। और इस उम्मीद के साथ वो लोग लेह से निकले कि कम से कम लेह से इतने 700-800 किलोमीटर तय करके पैदल, हालांकि उसमें मैंने देखा, मैं कल पंजाब में उनके साथ मैं उनको ज्वाइन किया था, उसमें 80 साल के बुजुर्ग भी है, उसमें हमारे लेडीज है, जवान है, हर कोई जो है इस उम्मीद के साथ ले से चले थे कि हम अपने देश के राजधानी में जाके देश के प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से इस उम्मीद के साथ वो लोग आए थे कि कम से कम जो हमारे मसाइल है उसको उनके सामने रखेंगे और उसमें गौर करके कम से कम बातचीत का सिलसिला जो है वो शुरू करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से कल जब बॉर्डर पे पहुंचे, सोनम वांगचुक जी इतने 700 किलोमीटर से ऊपर उन्होंने पैदल मार्च तय करके यहाँ पे पहुंचे। यहाँ पे पहुंचने के बाद उनको रोका गया, और सिर्फ रोका नहीं गया, उनको अलग अलग ग्रुप में बसों में डाल के जो है कहीं थानों में, कहीं पता नहीं कहाँ कहाँ जगह ले जाके उनको डिटेन किया गया। ठीक। दिल्ली पुलिस का कहना है कि दिल्ली में प्रोबेशनरी ऑर्डर्स है, प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स है कि 4 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकते हैं एक जगह। तो इसी को मद्देनजर रख के उनको गिरफ्तार किया गया है, उनको अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया है। जी जी। तो आपका उसमें नहीं, हमारा कहना ये है कि हमने आज तक लद्दाख में जो भी प्रोटेस्ट किया है, हमारे पहले KDA और एपेक्स में ये क्लियर किया है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, अपने जो इश्यूज है उनको गवर्नमेंट के सामने रखेंगे। लेकिन लद्दाख के आवाम, आपको पता है कि बहुत ही अमन पसंद लोग हैं वहाँ पे, देशभक्त लोग हैं, देश के लिए बहुत सारे कुर्बानियाँ लद्दाख के आवाम ने दी है। हमने कभी भी अमन में खलल आने नहीं दिया है, पीसफुली आज तक हमने प्रोटेस्ट किया है। और आज का ये जो पैदल जो आए हैं ये भी एक पीसफुली एक ये था। तो हमारा यही है कि या तो हमको बॉर्डर से एक पैसेज दिया जाए और दिल्ली में कहीं जगह पे जंतर मंतर या कहीं पे जगह देके हम अपना ये कंक्लूजन करेंगे, और वहाँ से एक मेमोरेंडम हम लोग प्राइम मिनिस्टर साहब को देना चाहते थे, जो कि वो लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं। दूसरा, अगर ये भी नहीं हो तो कम से कम हमारे लद्दाख के लीडरशिप आज दिल्ली में है, KDA, एपेक्स, सोनम वांगचुक जी यहाँ पे है, तो इनके साथ कम से कम एक मीटिंग फिक्स हो और MHA के साथ बातचीत हो, और फ्यूचर में जो है इन हमारे इश्यूज पे जो है बातचीत का सिलसिला शुरू हो। आपकी मांग है कि सोनम वांगचुक जो डिटेन हुए हैं उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए और एक बातचीत का सिलसिला जो है वो शुरू किया जाना चाहिए। बिल्कुल, सोनम वांगचुक जी को रिलीज, और जो भी यहाँ डिटेन किया है उसको उनको रिलीज किया जाए हम लोग, और सोनम वांगचुक जी को रिलीज करके हमारे बाकी जो KDA और एपेक्स की लीडरशिप भी है आज दिल्ली में, उनके साथ कम से कम MHA बात करे, आगे जो है बातचीत का सिलसिला किस तरह क्या करेंगे उस पर कम से कम बातचीत करें। राहुल गांधी जी ने भी इस पे ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि ये काबिल कबूल नहीं है कि उनको डिटेन किया गया है, और उन्होंने सवाल कुछ पूछे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी से। देखिए, हमने जब लद्दाख से हम जब निकले उस वक्त बहुत ही क्लियरली हमने एक मैसेज ये दिया था कि हम बहुत ही पीसफुली, हम इसलिए नहीं जा रहे कि हम दिल्ली जाके कोई वहाँ पे फसाद करें या कुछ अलग से करें। हमने क्लियर किया था, हम अपने आप को तकलीफ में डाल के, हमने कभी आज तक जितने भी प्रोटेस्ट किया है उसमें न गवर्नमेंट को, न एडमिनिस्ट्रेशन को, न वहाँ के जो माहौल है, जो एक अमन फिजा है, उसमें कभी खलल लाने की कोशिश नहीं किया हमने।
आज तक जितने भी प्रोटेस्ट किया हमने अपने आप को तकलीफ में डाले, अपने आप को परेशानी में डाल के हमने प्रोटेस्ट दर्ज किया है, ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, एमएचए का, क्योंकि लद्दाख पूरा आज पूरा एमएचए के अंडर में है, एमएचए के नज़र में हमारे जो इश्यूज आए और कम से कम बातचीत का सिलसिला शुरू हो, तो बहुत ही कल जब डिटेन किया गया हमें भी बहुत ही दुख हुआ, बहुत ही अफसोस। और हमारे साथ तकरीबन जो ले से चले हैं उसमें 20-25-20-30 जो है औरतें भी हैं, लेडीज भी हैं। उनको कल रात को मैं मिलने गया वहाँ पे, उन लेडीज के साथ जेंट्स को भी साथ में वहाँ पे डिटेन करके एक ही उसमें रखा हुआ है, वो मुझे बड़ा बड़ा तकलीफ दे लगा। और लद्दाख के अवाम के बारे में सब लोग जानते हैं, हम लोग दिल्ली में कोई फसाद करने नहीं आए हैं। हम लोग दिल्ली में आके ये इस उम्मीद के साथ आए थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है हमारी बात सुनेंगे और कम से कम जो 4 पॉइंट एजेंडा है उसमें कम से कम कहीं ना कहीं बातचीत का सिलसिला शुरू हो, क्योंकि इसमें एक पॉइंट ऐसा है जो हमारे नौजवानों के फ्यूचर का मसला है। आज तक लद्दाख में 5 साल हुए हैं, गेजेटेड एक पोस्ट का भी वहाँ पर रिक्रूटमेंट नहीं हुए हैं। आज लद्दाख में जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उसमें बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट का शिकार हैं, उनके एज जो है ख़त्म हो रहे हैं और एज हो रहे हैं। और आज तक पहले जेएनके के साथ जो पीएससी में था, आज लद्दाख के लिए कोई पीएससी नहीं है। लद्दाख के लिए अलग कार्डर की डिमांड कर रहे हैं, उसका कोई आता पता नहीं है। जॉब रिजर्वेशन के बारे में बात करने थे, अभी तक उसका वो पता नहीं। आज लद्दाख के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, आपको पता है लद्दाख में जो है वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोग वहाँ पे हैं, लेकिन फिर भी जो है वहाँ के पेरेंट्स जो है अपने पेट काट के भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आगे पीछे बैठते हैं और अच्छी तरह पढ़ाते हैं, और आज पढ़ के जो है लोग आज बेकार पड़े हैं। आपको मालूम होगा पिछले बार जब एक सर्वे आया तो आज देश में लद्दाख जो है बेरोजगारी में सेकंड नंबर पे पहुंचा हुआ है। तो आज इन इश्यूज पे बात करना बहुत जरूरी है, इन इश्यूज को एड्रेस करके इन पे कोई कोई हल ढूंढना अगर बहुत ही जरूरी है। इसलिए हम चाहते हैं कि कम से कम एक बातचीत का सिलसिला शुरू हो। हाजी साहब, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। मोजो स्टोरी से बात करने के लिए हम इस स्टोरी पे नज़र बनाए रखेंगे और इसको पूरा दिन में जो भी डेवलपमेंट्स होगी उनको फॉलो करेंगे। शुक्रिया हमसे मिलने के लिए। थैंक यू। There you heard him, Haji Hanifa, giving details that why are they protesting? Why are they marching to Delhi? What are their demands? What are their plans now? They are all saying that they are fighting for the rights of Ladakh. Remember, after the abrogation of Article 370 on August 5, 2019, the erstwhile state of Jammu and Kashmir was split into two regions, two union territories, the Union Territory of Jammu and Kashmir and the Union Territory of Ladakh. And since then, people from Ladakh have been demanding these things, and that those agitations have mainly been led by Sonam Wangchuk. To recap for our viewers, Sonam Wangchuk, the renowned climate activist, along with 120 of his supporters, have been detained by Delhi police just the time they were trying to enter Delhi border. They were detained right at the border, taken into buses to different places, and now there are reports that they have started a indefinite fast from those detention centers, and they say that they were going to Delhi to press for their demands. One of the main demand is that the sixth schedule status for the Union Territory of Ladakh and other demands that they have been pressing upon. But now other people who are there at the Singhu border have also been detained, according to reports. This is a joint agitation that's been launched by Kargil and Ladakh, and another demand is the uh, two Lok Sabha seats, for one each for Ladakh and for Kargil. We'll keep a close track of this story. We've been following this since last night when Sonam Wangchuk and his supporters were detained, and we'll keep a close track of this story through the day. But for now, thanks so much for watching the Mojo story, for tuning in, for all those latest developments on the detention of Sonam Wangchuk and his supporters at the Delhi border. Thanks for watching.
It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.